multicellular saprotrophs. Okay. General characteristics. The cell wall is present. If you remember, the cell wall of fungi is made up of a substance known as chitin. Chitinous cell wall. Chitinous cell, right? Which is a polymer of, it's a polymer of NAG. NAG का फुल फॉर्म क्या था? N acetyl glucosamine. N acetyl glucosamine. ठीक है? N acetyl glucosamine. Okay. Then the fungi comprises filamentous structures and these filamentous structures are called hyphae. They are called hyphae. The complete fungal body, the complete fungal body is called the mycelium. It is called the mycelium. Okay. Occurrence. तो इसी पॉइंट को पहले एक बार समझ लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं. ये इस तरह के फिलामेंट्स, each of this filament is known as hyphae. अब इस तरह के बहुत सारे फिलामेंट्स हैं, उनका क्लस्टर complete collection is called, this is the mycelium. इसको mycelium बोलते हैं, right? hyphae जो है, hyphae is of two types. Hyphae may be of two types. Aseptate, इसमें सेपरेटिंग वॉल्स सेल्स के बीच में नहीं है. एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक या सिनोसाइटिक, और दूसरे तरह के सेप्टेट. ठीक है. अगर हम एसेप्टेट हाइफी बनाए, लेट अस सपोज ये एक हाइफी है, तो इसमें ऊपर से लेके नीचे तक आपको क्या दिखाई देगा? इट इज एज इफ फिल्ड विद न्यूक्लियाई. देयर माइट बी और माइट नॉट बी इनकम्प्लीट सेप्टम. बीच में जगह पर हो सकता है कि आपको सेपरेटिंग वॉल्स दिखें, पर वो कंप्लीट नहीं होती.
सामने तक पूरी तरह से ऐसे ऐसे नहीं है. Incomplete septa may be present. And if I try to draw a septate hyphae, it would be having complete separation between the cells. The cells are completely separated from each other. This is how it is. So this is the septate hyphae, and this one is the aseptate hyphae. So now you can divide the fungi into two types: aseptate fungi and the septate fungi. ये ध्यान रखना, ये नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है और अपनी एनसीईआरटी में भी गिवन है. Aseptate and septate fungi. These are basically the two divisions of fungi. The aseptate fungi are included in a class Phycomycetes. Now today this Phycomycetes has been further divided into two classes, that is the Oomycetes and the Zygomycetes. Then the septate fungi are of three types, divided into three classes: the Ascomycetes, the Basidiomycetes, and Deuteromycetes. Now common names. Common names. Algal fungi. Algal fungi. Phycomycetes, or Oomycetes. Right. The members of the Phycomycetes are commonly known as algal fungi. And among these, the members of Oomycetes are considered as the true algal fungi. Right. Then the copulating fungi or conjugation fungi. Conjugation fungi. The conjugation fungi is Zygomycetes. Zygomycetes. Right. Then the third common name, the sac fungi.
ascomycetes. Ascomycetes. Then the club fungi. Basidiomycetes. Basidiomycetes. And then the fungi imperfecti. Imperfect fungi. Fungi imperfecti. Deuteromycetes. So these are the common names of the fungi. Everyone has noted down? Yes, sir. Let's move ahead. So we have studied two characteristics, right? As of now. Then we discuss about the common names. Right. Then again, we'll be switching over to the general characteristics. The third, the distribution or occurrence. The distribution or occurrence. They are cosmopolitan. Cosmopolitan. They can populate themselves almost anywhere. Exact मतलब क्या होता है? Can populate almost anywhere. Any substratum. किसी भी सरफेस पर ड्राई मॉइस्ट किसी भी सरफेस पर ये अपने आप को पॉपुलेट कर सकते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉस्मोपॉलिटन. राइट. नेक्स्ट, certain fungi occur in dikaryotic phase. They occur in dikaryotic phase, which means having two nuclei. Having two nuclei. The first dikaryotic cell formed is basically a product of plasmogamy.
plasmogamy. That is fusion of cytoplasms. Cytoplasm of two cells. But lacking karyogamy. दो cells थे, let this be one cell, let this be another cell. इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस. इसको हम पॉजिटिव स्ट्रेन पॉजिटिव बोल देते हैं, इसको हम नेगेटिव बोल देते हैं. This positive negative just means these are two different strains or types. Different strains or different mycelia right. The result is a single cell is formed but having both the kind of nuclei in it. Right. Now it would divide. It divides. When it divides, it forms hyphae. Each hyphal cell is having two nuclei. If I magnify this cell, show it to you. Now let this be the cell. It has got one nuclei of this kind and another nuclei of this kind. And this happens only in septate fungi. This phase is known as the dikaryotic phase. इस phase को हम क्या बोलते हैं? Dikaryotic phase. Right? Of the septate fungi. अब इससे अगर आप इन सेल्स को कंपेयर करो, so this cell was actually a cell of a monokaryotic phase. ये मान लीजिए हाइफी है और ये इसके सेप्टा, हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस. तो ये जो फेज है, ये फेज कौन सा है? दिस इज द मोनोकैरियोटिक. ठीक है. तो सेपरेट फंजाई आप ये चीज कह सकते हो, दे अकर इन टू फेजेस. व्हिच टू फेजेस? द मोनोकैरियोटिक फेज एंड
the dikaryotic phase. राइट, जब सेप्टा होगा तभी तो पता चलेगा एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है या नहीं है. अगर सेप्टा ही नहीं होगा तो आप ये कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है या दो न्यूक्लिया है? आप नहीं कह सकते. राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें. एनीबॉडी नो सर? Yes, sir. ओके, थैंक यू. नाउ the septa have pores. Fourth, fifth. The septa have pores. Two kinds: the simple pores and dolly pores. Right. इसका मतलब क्या है? अब लेट अस सपोज हम एक माइसियम को ऐसे इस तरह से बना देते हैं. ठीक है, एक जगह यहाँ एक परफोरेशन है, यहाँ एक कनेक्शन है और एक यहाँ कनेक्शन है. This is one cell, this is the second cell, this is the third cell. These are the cells of hyphae. hyphae के cells. ठीक है, अब अगर ये जो सिंपल पोर बनाए, इसमें कोई मार्जिन नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट लाइक दिस, गोल छेद है. ठीक है, जैसे इस सेप्टम को हम ऐसे 3D में अगर शो करें, ये जैसे एक सेप्टम है, ये सेल इधर को और इसके पीछे दूसरा सेल. ठीक है, तो अब ये सेप्टा है, सेपरेटिंग वॉल है, इसमें एक सिंपल ओपनिंग है. दिस इज द सिंपल पोर. बट इन दिस केस what happens, it has got a margin. Something like this. ठीक है, so this is basically the dolipore or the dolipore septum. अब सेप्टा कैसे हो गए? सिंपल सेप्टा एंड द डॉलीपोर सेप्टा. जिस तरह के पोर्स हैं उसके हिसाब से हमें नाम दे दिया इनको. ये क्या है? ये जो है, ये जो बनाया, ये सेप्टम कैसा होगा? दिस इज सिंपल सेप्टम. ये वाला सेप्टम कैसा होगा? इसको हम क्या बोल देंगे? डॉलीपोर सेप्टम. राइट, दिस कंप्लीट विद द पोर. देखिए यहाँ ये बीच में ओपनिंग है, दिस इज द ओपनिंग and these are the margins. The openings and the margins, right? So the opening and the margin, this complete structure, opening plus margin, is called parthenosome. हम स्टोमेटा पढ़ते हैं,
ये कुछ स्टोमेटा जैसा है यार. आपने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा होगा. It is surrounded by two guard cells. It has two guard cells, and then there is this tiny opening. Right. For reference, let us suppose this is the stomata. The stomata has got this opening in the center. This opening is known as stoma. इसे हम क्या बोलते हैं? This is the stoma, and these two are the guard cells. These two are the guard cells, right? This complete is known as the stomata. So this complete is known as here. It is known as parthenosome, right? Having the margins and the opening. This septum is known as dolipore septum. Dolipore septum is a characteristic feature of a type of fungi. Dolipore septum. It's characteristic, or you can say it is unique, specific, unique to Basidiomycetes. Basidiomycetes club fungi पढ़े थे हमने. Mushrooms. This is characteristic of Basidiomycetes. Basidiomycetes में ही होते हैं और किसी में नहीं होते. Now, these dolipore septum, they allow selective transport. All substances cannot move across this kind of opening. These allow selective transport. Okay. The reserve food is glycogen. Just like animals. Just like animals. Fungi is a kingdom whose members resemble animals and plants. They resemble animals and plants. ठीक है? Plants की तरह इनमें सेल वॉल होती है. Animals की तरह ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. Plants की तरह या लोअर प्लांट्स की तरह इनमें फिलामेंट्स होते हैं. कॉलोनीज बनाते हैं ये. और एनिमल्स की तरह ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं सेल्स में. They have dual features. Now, what's the number? 7 features. 7 general characteristic. Lomasomes. Lomasomes are again unique to the fungi. So what are these lomasomes? Let this be the cell wall. I'll just draw a diagram. Let this be the cell wall. This is the cell wall. Now inside the cell wall, the cell membrane is forming foldings like this. And these are foldings towards the outside.
These are expaginations. These could be everywhere, all around the cell. These structures are, these are the lomosomes, the expaginations. These are expaginations. These are not infoldings, these are outfoldings. Expagination का मतलब क्या होता है? Outfoldings. These increase surface area for absorption. For absorption. These are positioned below the cell wall. They are inside the cell wall, right? Inside or below the cell.